Today we are going to talk about how to talk with a stranger. किसी अजनबी से बात कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप उसका हाल चाल पूछ सकते हैं, फिर आप नाम पूछेंगे। अब ये किस तरह करते हैं, लेट्स सी दैट। आपका क्या हाल है? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? अब ये दो लोग कैसे करेंगे? हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? आई एम ग्रेट एज वेल, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपने उससे पूछा, उसने आपसे पूछा। हाल चाल पूछने के बाद आप फर्दर अगला क्वेश्चन फ़ौरन नाम का कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम सर? आपका नाम क्या है? कैन आई हैव योर नेम सर? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कैन आई नो योर नेम सर? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो डिफरेंट तरह से ये बात आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे रहता है। आप सिंपली कह सकते हैं सर वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? या आप ये कह सकते हैं आर यू फ्रॉम इंग्लैंड? अगर वो इंग्लैंड से है तो कहेगा यस आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, यस आई एम। और अगर वो नहीं है तो वो सिंपली कहेगा नो आई एम नॉट, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम ऑस्ट्रेलियन। या तो वो नेशनैलिटी बता देगा या तो वो डायरेक्ट वो जगह बता देगा। इसी तरह आप डू का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। डू यू लिव इन इंग्लैंड? ठीक है। डू यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया? डू यू लिव इन अमेरिका? कंट्री का नाम ले सकते हैं या आप कह सकते हैं आर यू अमेरिकन, आर यू ऑस्ट्रेलियन, आर यू चाइनीज़। अच्छा, ये दो लोग अब किस तरह करेंगे? आर यू फ्रॉम इंग्लैंड सर? नो आई एम नॉट, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जॉब का पूछ सकते हैं कि जॉब क्या करता है। व्हाट्स योर जॉब सर? व्हाट डू यू डू? आप क्या काम करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आप रोज़गार क्या है आपका? आप जीने के लिए क्या करते हैं? वेल आई एम अ बैंक मैनेजर। व्हाट डू यू डू? मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप क्या करते हैं? अब यू के ऊपर आप थोड़ा स्ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू डू? क्या आप क्या करते हैं? व्हाट्स योर जॉब सर? वेल आई एम अ बैंक मैनेजर। व्हाट अबाउट यू? इस तरह भी कह सकते हैं आपके मुतालिक क्या ख्याल है, आप क्या करते हैं? आप अपनी जॉब बता दें। वेल आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ एक। नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। आप कैन यू टेल मी हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? आपकी यानी कि हॉबी क्या है, आप अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं? या श्योर एक्चुअली आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग सम बुक्स। जी ज़रूर, मैं ज़्यादातर अपना वक्त जो है किताबें पढ़ने में गुजारता हूँ। आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग सम बुक्स। अब सम बुक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ही रीड सम पर्टिकुलर बुक्स। तो वो फर्दर क्वेश्चन कर सकता है, अच्छा बहुत खूब, आप किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? वेल ग्रेट, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, और व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। दोनों तरह से ठीक है, आप किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या आप किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं। दोबारा इसको करते हैं एक दफ़ा। कैन यू टेल मी हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? वेल आई लव टू रीड सम बुक्स। Well, great. Can you tell me what kind of books do you read? Yeah, sure. I love to read Islamic books. मैं ज़्यादातर इस्लामिक बुक्स पढ़ता हूँ। Most of the time I read Islamic books. मैं इस्लामिक बुक्स पढ़ता हूँ। I read novels. मैं novels पढ़ता हूँ। I read short stories. मैं short stories पढ़ता हूँ। You can say anything here. Even you can say I watch movies. I spend time talking to my friends. I do chat with my friends. Okay, let's move on. अभी आप जानना चाहते हैं तो अपनी बात को ख़त्म कैसे करना है उसका भी एक तरीका होता है। आप कह सकते हैं I'm afraid my train would be here any minute. I'll have to go. मुझे ख़दशा है कि मेरी ट्रेन अभी किसी भी लम्हे यहाँ हो सकती है, अभी मुझे निकलना होगा। Can be here any minute. Would be here any minute. ठीक है, आप कुछ भी would be, should be, can be, must be ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो कहता है yeah sure, I really like to talk to you, great to talk to you, nice to talk to you, great to meet you. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब वो एथिकल था, मतलब फ़ौरन आप किसी से डिस्कनेक्ट नहीं कर देते बात, बल्कि आप उसको कोई ख़ास सिचुएशन में लेके जाते हैं कि सर मुझे कॉल आ रही है, आई हैव टू गो, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई लीव नाउ, आई एम इन लिटिल हरी।
I have to pick up my brother, भाई को पिक करना. You can say anything. किसी भी तरह आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सेंटेंस लाजमी आपको बोलना चाहिए. अब इसका जवाब वो देता है कि मुझे भी बात करके बड़ा अच्छा लगा. सेम हेयर. आई होप यू इन्जॉयड दिस लेक्चर. आप इसको एक दफ़ा रिकॉर्ड करके भेजें. मैं आपको एक जनरल रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ अपनी आवाज़ में. Hello, sir. How are you? I'm great. What about you? Well, I'm great as well. What are you doing here? Actually, I'm waiting for a train. It can be here in 5 to 10 minutes. What about you? Oh, well, I was just leaving for college and I'm waiting for my brother. Oh, great. Are you from England? No, not really. I'm from Australia. Australia? Oh, great. How long have you been staying there? Well, I've been staying there for, I guess, ten years. I spent a lot of time there with my family. Well, that's great. What do you do, sir? Uh, Actually, I'm a bank manager. What about you? I'm a teacher, sir, as well as I'm studying software engineering. Oh, well, that's great, boy. Can you tell me what do you do else? I mean, how do you spend your free time? Yeah, sure, sir. I love to read books as I'm a student and I have to read a lot of books. But I read some extra books, Islamic books, and some kind of stories, short novels, and some interesting, funny horror stories as well. Well, great boy. It's interesting to talk to you. So I would have to leave now. Sure, we will be talking some other day if we get a chance to meet. Sure, uncle. It's honor to meet you. See you. Bye. So this is the way you can talk